Krishnaya Vasudevaya, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha, Govindaya Namo Namaha, Krishnaya Vasudevaya, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha, Govindaya Namo Namaha, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha, Govindaya Namo Namaha, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha, Govindaya Namo Namaha, Krishnaya Vasudevaya, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha, Govindaya Namo Namaha, Krishnaya Vasudevaya, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha, Govindaya Namo Namaha. Girls, girls. Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopa Kumaraya, Govindaya Namo Namaha. That's right. Krishnaya, the Supreme Lord, the Supreme Lord, Vasudevaya, Vasudevaya, unto the son of Vasudeva, unto the son of Vasudeva, Devaki Nandanaya, Devaki Nandanaya, unto the son of Devaki, unto the son of Devaki, Cha, cha, and Nanda Gopa, Nanda Gopa, Nanda and the cowherd men, Nanda the cowherd men, Kumaraya, Kumaraya, unto their son, unto their son, Govindaya, Govindaya, unto the personality of Godhead, unto the personality of Godhead, who enlivens the cows and the senses. who enlivens the cows and the senses. Namaha, Namaha, respectful obeisances. respectful obeisances. Namaha, Namaha, obeisances. obeisances. Translation. Let me therefore offer my respectful obeisances unto the Lord, who has become the son of Vasudeva, the pleasure of Devaki, the boy of Nanda, and the other cowherd men of Vrindavan, and the enlivener of the cows and the senses. So, in the beginning, Kunti Devi said that Namasya Purusham Tadyam Isharam Prakriti Param. I offer my obeisances unto the person, Purusham, who is Prakriti Param, who is beyond this material manifesting. Krishna
is complete spirit, soul, super soul. He has no material body. So in the beginning, Kunti Devi gave us this understanding that God, the Supreme Purusha, Purusha means person. He is not impersonal, Purusha. But he is not a Purusha of this material world, not a personality of this material creation. That is to be understood. The impersonalist cannot accommodate in their poor fund of knowledge how the supreme absolute truth can become a person. Because whenever they think of person, they think of a person of this material world. That is the defect. So, the poor fund of knowledge. Why God should be a person of this material world? So that was clear in the beginning. Prakite para, beyond this material creation. But he is a person. So now that personality, although alaksham, invisible, now by the grace of Kunti, we can understand that although the Supreme Person is invisible, now he has appeared to be visible, Krishna. Therefore she says, Krishnaya Vasudevaya. Vasudeva conception, sometimes the impersonalists, they have Vasudeva conception, means all pervading. So Kunti Devi is pointing out that Vasudeva is Krishna, all pervading. Krishna, by his Vasudeva feature, he is all pervading. Ishara sarvabhutanam riddhese arjuna tishthati. This feature of Krishna, Krishna, the original person, has got three features. As the Supreme Personality of Godhead, as all-pervading Paramatma, Super Soul, and impersonal Brahma effulgence. So, those who are interested in Bhakti Yoga, they have no business with the impersonal Brahma effulgence. That is for common man. Common man. Just like you can try to understand those who are inhabitants of the sun planet, what they have got to do with the sunshine. That is the most insignificant thing for them, sunshine. Similarly, those who are advanced in spiritual life, they are interested in the person, Purusham, Vasudeva, Purusham. That realization takes place, as it is stated in the Bhagavad Gita, after many, many births. Bahunam janmanam anti. At the end of many, many births. These impersonalists who are very much attached to the Brahma effulgence, such persons, they are called Gyani. They are trying to understand the absolute truth by dint of their knowledge. But they do not know that their knowledge is very imperfect and limited. And Krishna, the absolute truth, is unlimited. You cannot approach the unlimited by your limited knowledge. That is not possible. So, by the grace of devotees like Kunti Devi, we can understand that here is the Vasudeva, the all-pervading absolute truth, Paramatma. Vasudeva is here, Krishnaya, Vasudevaya.
So this Vasudeva realization is possible by the impersonalist after many, many births. Not very easily. Bhavanam janvanam ante jnanavan manga prapaddate Vasudeva sarvamiti sa mahatma sudurlava. Sudurlava. Very rare. Mahatma, broad-minded. But one who cannot understand Krishna, they are cripple-minded. They are not broad-minded. If one becomes broad-minded, then by the grace of Krishna, he can understand Krishna. Sevanmukhi hi jiva, the process is sevanmukh. Service. Service beginning with the tongue, Vasudeva realization is possible. The service, the first service is Savanam Kirtanam. Chant Hare Krishna mantra and hear repeatedly. And take prasad. These are the two businesses of the tongue. So, he'll realize. Very simple man. Sevanmukhe hi jivhadu. Krishna will reveal. Not that by your endeavor you can understand Krishna, but your endeavor in the loving service, that will make you qualified. The Krishna will reveal. Sayam eva spurattata. Krishna is very much anxious to take you back home, back to Godhead. But we are stubborn. We do not wish. So he is always finding out the opportunity how you can be taken back home, back to God. Just like affectionate father. The rascal son left his father loitering in the street and have no shelter, no food, suffering so much. The father is more anxious to take the boy home. Similarly, Krishna is the Supreme Father. All these living entities within this material world, they are exactly like the misled child of a big rich man loitering with. So the greatest benefit to the human society is to give him Krishna consciousness. Greatest. You cannot give any benefit, any kind of material profit will not satisfy the living entity. If he is given this Krishna consciousness, just like the same process, a bewildered boy is loitering in the street, if he is reminded, my dear boy, why you are suffering so much? You are son of such and such very rich man, your father has got so much property, why you are loitering in the street? And if he comes to his consciousness, yes, I am the son of such and such big man, why shall I loiter in the street? He goes back home. Jadagatyana nivartanti. Therefore, this is the best service, to inform him that you are part and parcel of Krishna, you are son of Krishna. Krishna is opulent, 6 kinds of opulence. Why you are troubling, why you are rotting in this material world? This is the greatest service. Krishna consciousness. But Maya is very strong, still it is the duty of every Krishna bhakta to try to enlighten everyone to Krishna consciousness. Just like Kunti Devi is pointing out. First of all, she said, Alaksam sarvabhutanam antarbhahi avasthita. Although Krishna, the Supreme Person, is without and within, still to the rascals and fools is invisible. Therefore, she is pointing out, here is the Lord, Krishna, Vasudeva.
He is the all-pervading Supreme Personality of Godhead. But he is very much pleased to become the son of Devaki. Devaki Nandanaya. Devaki Nandanaya. Devaki Nandan is mentioned in the Atharva Veda also. Krishna comes as Devaki Nandan. And his foster father is Nanda Gopa, Nanda Maharaj. So Krishna likes to be related with his devotee as father and mother. Here in this material world, we try to make our relationship with the Supreme as father, but Krishna wants to become the son. Therefore, Nanda Gopal. He takes pleasure to become a devotee's son. The ordinary man, they want God as father, but that is not very pleasing to Krishna. Father means to become father means always botheration, give me this, give me this, give me this, give me this. You see? Of course, Krishna has got immense potencies to supply. Eko ju bahunam vidudati kama. He can supply everyone as much he wants. He is supplying food to the elephant. He is supplying food to the ant. Why not to the human being? But these rascals, they do not know. They are working day and night like ass to find out bread. And if he goes to church, they are also, give me bread. They are only bread problem. That's all. Although the living entity is the son of the richest, opulent person, but he has created his bread problem. This is called ignorance. He thinks that if I do not solve my bread problem, if I do not drive my trucks day and night, that's such a nonsense civilization, you see. Bread problem. Where is bread problem? Krishna can supply, if he can supply food to the elephant. In Africa there are millions and millions of African elephants, you know, and they are supplied food. The Bhagavad says, don't waste your time for this bread problem. Don't waste your time. Tasyaiva heta prajateta kovida na labhati jad brahmatam uparjat. Don't waste your time. How to solve your economic problems? This is nonsense. Of course, it is very revolutionary. People will hate me. The what Swamiji is speaking. But actually this is the fact. This is another madness. Suppose you have got your rich father, enough food, where is your economic problem? This is madness. There is no economic problem. If you know that my father is the richest man of this city, then where is my economic problem? Actually that is the position. We have no economic problem. Everything is there, complete. Purnam, Purnamada, Purnamadam, Purnat Purnamudachyati. Everything is complete there. You want water, just see, there are oceans of water. You want purified water, you cannot, although the ocean water is so much, when there is scarcity of water, you have to take help of Krishna. He will evaporate the water, he will make it cloud, then when it is falls down, then it becomes sweet, otherwise you cannot touch. Everything under control. Everything is full, water, light, heat, everything is complete. Purnat Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya, Purnameva avashishyate. His stock is never finished. Simply you become obedient and the supply is there. You can understand. These Krishna consciousness persons, they have no problem.
economic problem. Everything is sufficiently supplied by Krishna. In Los Angeles, the neighbors, they are very envious. You do not work, you have no anxiety, and you have got 4 cars, you are eating so nicely. How is that? They inquire from our devotees. That is the actual fact. We are spending so much money, we have got so many centers, the calculation is about $70,000 spending. Who is supplying? Somehow or other we are getting. So there is no problem. You simply become sincere servant of Krishna, everything is there. This is the test. They are envious of us that we do not work, still we have got so much. So why don't you come and join us? That they will not do. You come with us, chant Hare Krishna. No, that I cannot do. All right, then work with your tracks. So. They have made their own position dangerous and others' position also. They say at any moment there may be accident. You see, this is civilization. Nonsense. This is not civilization. Civilization means calmness, peace, prosperity, shanti. In peace and prosperity, one should be Krishna conscious, always. Tasyaiva heta prajatita kovida. Nalabhate jad brahmadam uparjadha. In the animal life or other than human life, we had worked so much, only for morsel of food, day and night working. But still, the food is there, simply. Avidya karma sangha anya titiya shaktirishyate. Avidya, this material world, is full of ignorance. So therefore, our endeavor should be how to come out of this ignorance. Tasyaiva hetu. For that reason we should work only. How to come out of this ignorance. Thus I am this material body, I have to work day and night, and then I shall get my food, then I shall leave. This is ignorance. Tasyaiva heta prajate. So this ignorance, this life of ignorance we have passed in the forms other than the human being. Animal life, bird's life, beast life. Now, this life should be peaceful, calm and quiet, and jivasya tattva jigyasa, simply for inquiring about the Absolute Truth. That should be the business. Simply. Jivasya tattva jigyasa, athato brahma jigyasa. Simply sit down, just like we are sit down. We are sitting down and inquiring about Krishna. This is life. This is life. But what is this life? Working day and night like ass? No, that is not life. Therefore Bhagavad says, your life should be engaged for this purpose. Tasyaiva heta prajatit kovida. Kovida means intelligence. Then how my economic problems will be solved? The answer is, tallabhate dukkha badannata sukham. You are after happiness. Are you after distress? No, sir. So why distress comes upon you? You are not anxious for distress, calamities. Why do they come upon you? Similarly, so far your happiness is also concerned, that will also come upon you. Because your life, according to your karma, is mixed up with some portion of happiness, some portion of distress. If the distress comes without any invitation, the happiness also will come without invitation, without any endeavor. Because you are destined already. There's so much happiness, so much distress we will have. Destined. So you cannot change it. Try to change your Lord, this material conditional life. That is your only business. Tasyaiva heta prajatita kovida. Nalabhate jad brahmatam uparjata. Brahmatam uparjata.
You have tried. Brahmata uparjada. Upar means higher planetary system. Sometimes we get our birth in higher planetary system as demigods, and sometimes adha as animals, as cats and dogs, as janma, the stool. This is going on. This is going on according to our karma. Chaitanya Mahaprabhu said, Ei rupe brahmanda bhramiti kono bhagwan jeev. Only a fortunate living entity gets this opportunity of association of Krishna and Krishna's devotee. Then his life becomes sublime. Ei rupe brahmanda bhramiti kono bhagwan jeev. Guru Krishna kripa pai bhakti lata. This bhakti lata is the seed of devotional service. Chanting Hare Krishna mantra. So, Kunti Devi is pointing out that who is the person, Alaksha, invisible? Yeah, Krishna. Now, Krishna, there are so many Krishna. Vasudevaya, the son of Vasudeva. There are many Vasudevas. No, Nanda Gopa, Nandana, the foster son of Maharaj Nanda. 3 times he is pointing. Here is Krishna. Krishna, who officially takes his birth as son of Devaki and Vasudeva, but he enjoys the company of Mother Jasoda and Nanda Maharaj, the childhood company. This is Krishna's pastimes. So, Ananda Leela, Maya Vigrahaya. Ananda Leela, Krishna's Leela, pastimes are all jubilant. Ananda Leela Maya. Anandamaya Bhyasa. He is by nature Anandamaya. Krishna, you will never find Krishna is very unhappy. Krishna is never unhappy. Krishna is always happy. Therefore, Nanda Gopa, Kumaraya, Govindaya. He is happy, and whoever associates with him, he is also happy. Govinda. We are after sense gratification. Go means senses. So if you associate with Krishna, you enjoy your senses affluently. Just like the gopis are dancing with Krishna. So there is no scarcity of sense gratification also. But that is not this sense, gross sense gratification. That is spiritual sense. That is spiritual sense. Ananda Chinmaya Sadhu Jalavigrahasya, we chant every day. That sense gratification is Ananda Chinmaya. Chinmaya, in the spiritual world. Not this third class Ananda with these bodily senses. This is not Ananda. This is an illusion. This is illusion. We are thinking that I am enjoying. But that is not Ananda. This Ananda is not fact because we cannot enjoy this material sense pleasure for long. Everyone has got experience. It is finished. It is finished. But spiritual enjoyment does not finish, it increases. That is the difference. Ananda Chinmaya Sadhujjala Vigrahas. Govindam Adi Purusha. So you have to associate with Govinda. Here is also it is said, Govindaya Namo Namo. I offer my respectful obeisances to Govinda. So this Krishna consciousness movement is so nice. You become directly in contact with Govinda. This deity worship is also directly in contact with Govinda. Sri Vigrahara Dhananittanana Sringaratana Mandiramarjanadu. This Vigraha, the deity of Krishna, that is also Krishna's mercy. Because Krishna is alaksha, invisible, he has become visible for your facility. As you can see, it is not that Krishna is stone or Krishna is wood or Krishna is metal. Krishna is always Krishna. But he appears because you cannot see except wood, stone and metal. He appears like that.
wood, stone or metal. But he is not wood, stone, metal. You will get the same facility as Krishna personally. If you associate, when you associate, you will associate with Krishna. But at the present moment, because Krishna is invisible, therefore he has very kindly taken a form which is visible by you. This is Krishna's mercy. Do not think he is Krishna, stone Krishna. Krishna is everything. Krishna is everything, so Krishna is stone also. Krishna is stone also. But he is not that stone that cannot act. Krishna act also in the stone form also. Krishna act also in metal form also. And he will perceive that. Sameva Spuratpada. The more you give service, the so-called stone also speak with you. There are many instances like that. So we should take to this Krishna consciousness movement according to the Shastra. See, I am very pleased that you are doing nicely, dressing the deity very nicely. More and more in this way, offer Krishna nice prasadam, nice foodstuff, nice dress, keep the temple very clean. See Mandira marjanadishu. Marjana means cleansing. Either you dress Krishna or cleanse the temple, the effect is the same. Don't think, I am a cleanser and he is a dresser. No, the dresser and the cleanser are the same. Krishna is absolute. In any way, be engaged in Krishna's service, your life will be successful. This is Krishna consciousness movement. So, by the grace of Kunti Devi, we can understand that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. Vasudeva, another meaning of Vasudeva is that when you come to the platform of Vasudeva, Sattang Visuddham, Vasudeva Sabda. Sattang, Satta, goodness. First of all, you have to come to the platform of goodness. But here in the material world, the goodness is also sometimes contaminated by other low qualities, ignorance and passion. So, by hearing about Krishna, Sinnatang Sagata Krishna, Punna Savana Kita, just like you are hearing about Krishna. Similarly, try to hear about Krishna, always, 24 hours. Chant about Krishna. In this way, the dirty things will be cleansed. Nasta prayeshu avadrishu nittang bhagavata sivaya. Nittang. Nittang means always. Not that Bhagavad Saptaha, the official. No, not like that. There is another exploitation. In the Bhagavad it is said, nittang bhagavata sivaya. Nittang means daily, 24 hours. Either you read Śrīmad-Bhāgavatam or carry out the order of your spiritual master. This is also order. Krishna, Bhagavat is spiritual master, Vishnu, he is also Bhagavat. Acharyas, Bhagavat. Grantha Bhagavat and person Bhagavat. The person Bhagavat or book Bhagavat, you always serve. Nittang Bhagavata Sivaya. Bhagavati uttama sloke bhakti bhavati naisthiki. Then you will be fixed up. Naisthiki. Nobody can move you. Bhagavati uttama sloke unto the Supreme Personality of Godhead. So in this way, Krishna consciousness movement should be realized by you, by the process prescribed, and try to give to the people. This is the greatest welfare activities in the world, to awaken Krishna consciousness, the dormant Krishna consciousness. It is, of course, practically you can see 4 or 5 years ago, none of you were in Krishna consciousness, but it has been awakened.
Now you are Krishna conscious. So others can be awakened also. There is no difficulty. The process is the same. So, by following the footprints of devotees like Kunti, we shall be able to understand, as she is pointing out, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya Cha, Nandagopa Kumaraya. This is Krishna's identification. Just like we take identification of a person, what is your father's name? So here we are giving, presenting God with his father's name, with his mother's name, with his address. We are not impersonal, it's big idea. No, everything complete, perfect, the identification. If you take advantage of this propagation of Krishna consciousness, then you are certainly benefited. Thank you very much. Jaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripatamaham Bande Shri Guru Nadinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा। तो आप सबका आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैं सबसे छोटा हूँ यहाँ पे, मेरे को सेवा मिली है ताकि अच्छे से कर पाऊँ। तो आज के एक्चुअली मेरे को बोला था कि क्वेश्चन आंसर नहीं लेने हैं, लेकिन शायद लेक्चर पता नहीं स्किप हुआ बीच में, क्या हुआ, क्योंकि ये 1 आवर का लेक्चर था तो मैंने ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं किया है, बट फिर भी कोशिश करेंगे पूछने की। मैंने क्वेश्चंस बनाए भी नहीं हैं। तो आज का जो ये लेक्चर था उसमें प्रभुपाद जी इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास प्रभुपाद जी हैज़ बीन शेयरिंग फ्यू पॉइंट्स, वेरी रेलेवेंट पॉइंट्स। तो उसमें एक टर्म यूज़ की थी संस्कृत की, ईश्वरम प्रकृते परम। तो कोई बताना चाहेगा उसके बारे में कि ये क्यों यूज़ किया था वहाँ पे? कुंती देवी बता रही है कि वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फ्रेज। सो व्हाट शुड बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस फ्रेज? प्रकृते ईश्वरम प्रकृते परम। हाँ जी। ईश्वर पूरी सृष्टि में व्याप्त है। सॉरी एक बार दोबारा बोलेंगे मुझे? ईश्वर पूरी सृष्टि में व्याप्त है। यस करेक्ट, हरि बोल। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ था, और या फिर एक नेक्स्ट जो प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट शुरू किया, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द इम्पर्सनलिस्ट। कोई बताना चाहेगा कि प्रभुपाद जी इम्पर्सनलिस्ट के बारे में बता रहे थे कि, और एक मैं आपको इजी कर देता हूँ लाइक इस फ्रेज को, तो उसमें हाँ आप बताएंगे मुझे? They are trying to understand the infinite by their finite knowledge. Yes, true, very true.
एनीबडी वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? हाँ जी. प्रभुपाद जी बताते हैं कि दे थिंक, मतलब दे ट्राई टू थिंक इफ एब्सोल्यूट ट्रूथ इज पर्सन, देन ही थिंक्स ओनली अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड. तो ये भौतिक जगत के पर है, वो सोच नहीं सकते, इसलिए वो फिर इम्पर्सनल फीचर को फॉलो करते हैं. करेक्ट. हरी बोल. तो मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा. तो मैं एग्जैक्ट जो यहाँ पे लाइक प्रभुपाद जी ने मेंशन किया वो सेम लाइक बोलने की कोशिश करता हूँ. तो द इम्पर्सनलिस्ट कैन नॉट एकोमोडेट इन देयर पुअर फंड ऑफ नॉलेज हाउ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ कैन बिकम अ पर्सन. बिकॉज वेन एवर दे थिंक ऑफ अ पर्सन, they think of a person of this material world. That is their defect. और उसके बाद प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा बताया कि कैसे विजिबल और इनविजिबल, कृष्णा और वासुदेव को प्रभुपाद जी लाइक डिफरेंशिएट कर रहे थे. तो कैसे लाइक हु इज विजिबल एंड हु इज इनविजिबल. सो समबडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन. वासुदेव और कृष्णा में डिफरेंस बता रहे थे प्रभुपाद जी. कोई बताएगा? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था नेटवर्क गोपीनाथ को. वासुदेव मतलब बता रहे थे वन हु इट्स ऑल ओवर द मटेरियल वर्ल्ड. यस. हाँ जी. एंड कृष्णा? कृष्णा इज द पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ. हाँ जी. व्हेन इट बिकम्स विजिबल देन इट बिकम्स कृष्णा, कृष्णा. एंड व्हेन लाइक ऑल प्रिवेडिंग मींस वासुदेव. हरि बोल. व्हाई डिवोटीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्पर्सनल ब्राह्मण इफिलिजेंस? कोई बताना चाहेगा? एक बड़ी अच्छी एनालॉजी भी दी थी प्रभुपाद जी ने इसमें, इससे रिलेटेड. पीछे उनको देना मुझे. हरे कृष्णा जी. हाँ जी. जो डिवोटीज होते हैं वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, निराकार उसमें इम्पर्सनलिस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. जैसे सूर्य का एग्जांपल दिया है कि जो लोग होते हैं वो सूरज की किरणों में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो सूर्य में इंटरेस्टेड होते हैं. यस. हरे कृष्ण. हरि बोल. How does Vasudev realization is possible? प्रभुपाद जी ने वो श्लोका कोट किया था ना, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रबोधिते. उसके बाद बता रहे थे कि ब्रॉड माइंडेड, सुदुर्लभा, ब्रॉड माइंडेड, और लाइक फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने सेवोन्मुखे ही जीवादो वाला एक श्लोका कोट किया था. और कोई बताना चाहेगा? उसमें बता रहे थे कि वासुदेव रियलाइजेशन. हाँ जी प्रभु जी, इनको देना आगे या उनको बीच में वो प्रभु जी ना. हाँ यही बोला. Only by loving devotional service one can understand the Vasudev realization. Yes, हरि बोल. तो इसमें मैं एग्जैक्टली रीड आउट करता हूँ यहाँ से. बहुत अच्छा बता रहे थे. सेवोन्मुखे ही जीवा दो. द प्रोसेस इज सेवोन्मुखा सर्विस बिगिनिंग विद द टंग. वासुदेव रियलाइजेशन इज पॉसिबल. एक्चुअली आपने बोला लविंग डिवोशनल सर्विस, बट उसका एग्जैक्ट था कि सर्विस बिगिनिंग विद द टंग called Vasudev, then because of this only Vasudev realization is possible. और टंग से हम कौन कौन सी सर्विस कर सकते हैं? प्रभु जी उनको पीछे देना उधर. वो प्रभु जी इसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान का नाम लेते हैं और पाते हैं. हरि बोल. तो हम चैंट कर सकते हैं और प्रसाद खा सकते हैं, राइट? तो दीज आर टू सर्विसेज विच कैन बी डन थ्रू आवर टंग. यस. और उसमें लाइक हाँ, फिर प्रभुपाद जी उसमें बता रहे थे कि कुछ रास्कल्स के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे थे. और फिर उन्होंने बताया कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ह्यूमन सोसाइटी विच वी कैन गिव टू द पीपल. ग्रेटेस्ट बेनिफिट क्या, ग्रेटेस्ट जो हेल्प है हम लोग लाइक सोसाइटी की कर सकते हैं, उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे थे. कोई बताना चाहेगा? उसमें एक बड़ी अच्छी एनालॉजी भी दी थी. एक चाइल्ड की एनालॉजी है, बस मैंने एग्जांपल आपको थोड़ा सा हेल्प कर दिया. हाँ जी. कृष्णा कॉन्शसनेस, ये इसका आंसर है.
और इसका एनालॉजी है जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई बच्चा खो गया, किसी पेरेंट्स का कोई बच्चा खो गया, तो उसको हम टेम्पोररी के लिए कुछ चॉकलेट दे सकते हैं, ये वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको उसके पिता से, पेरेंट्स से मिला दें, तो डैट विल बी एक्चुअल बेनिफिट फॉर डैट चाइल्ड. So we all are lost in this material world. We are separate from God. So if if somehow or other we can connect everyone to Krishna, that will be the greatest benefit for all human beings. हरि बोल, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने। और इसके बाद इस पैराग्राफ को प्रभुपाद जी फिनिश करते एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टेटमेंट के साथ, वो थी कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी कृष्ण भक्ता टू ट्राई टू एनलाइटन एवरीवन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। और मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि टाइम भी होने वाला है। और प्रभुपाद जी ने एक प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। Every single person is looking after for one thing. If he goes to church, he asks for one thing. What is that? Whole day he is working very day. Hanji, yes. हरि सुंदर जी बताएंगे। उधर कोई बता रहा था ना पीछे। हाँ जी, रसराज जी बताएंगे। ब्रेड, आज प्रभु जी ने नीचे सैंडविच बनाया सबके लिए। यस, ब्रेड प्रॉब्लम। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसके बारे में, इसी पॉइंट को? व्हाट इज द ब्रेड प्रॉब्लम? वो प्रभु जी पीछे बताना चाहते हैं। हरे कृष्ण जी, लोग चर्च मंदिर वगैरह जाते हैं और कुछ एक बार जोर से बोलेंगे, जोर से। प्रभु जी, मतलब हम भगवान के बेटे हैं, तो मतलब हम भगवान सबसे अमीर है, तो मतलब 6 ऑपुलेंस है, तो हम भी लेकिन हम उनसे ब्रेड मांगते हैं और इधर इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉफिट के लिए भागते रहते हैं इधर उधर। तो वैसे हम भगवान के सन है, लेकिन फिर भी हम सबसे अमीर है। लेकिन तो प्रभुपाद जी बेसिक, हाँ जी, आप कुछ यू वुड लाइक टू ऐड प्रभु जी? यस, प्रभु जी को दे दो। Prabhupada said that we have, in this human current civilization, we have created bread problem. So everyone is working like an ass whole day, just because of this anxiety that if I don't work, what will I eat? So that's how they created bread problem. Yes. तो प्रभुपाद जी ने इसी से एक पॉइंट ऐड भी किया था। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि देयर आर सो मेनी एनिमल्स, दे डोंट वर्क, दे डोंट गो टू स्कूल, दे डोंट गो टू कॉलेजेस, but still they are also getting their food stuff to eat, and they are getting in plenty of quantity is there, is available. Just like there are so many elephants in Africa, so they are also being they are also supplied their food stuff. So who is supplying them? That is God. Krishna is supplying them. So why there is no, for us it's not something like that we have to work very hard just to get two roti to eat. तो प्रभुपाद जी ने वो भी बताया। और फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि कृष्णा हैज अनलिमिटेड स्टॉक and our stomach capacity is limited. So if Krishna wants, Krishna has millions of hands, we have only 2, how much we can hold? तो प्रभुपाद जी वो बता रहे थे बाद में। और प्रभुपाद जी बताते कि कृष्णा के पास he has his stock will never finish, he has unlimited stock. तो थैंक यू। क्वेश्चंस तो और भी बन सकते हैं बट टाइम हो गया, तो प्रभु जी भी बताना चाहेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो प्रवचन है, प्रभुपाद बहुत आँखों को खोलते हैं। चक्षुदाना दिलो जयी, उन्होंने बंद आँखों को खोला। तो जब आँखें बंद होती हैं तो हमारी बहुत सी समस्याएं होती हैं, और आंखें खोलने से वो सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि जैसे भोजन की समस्या है, तो पूरी दुनिया में जो है भोजन की समस्या है ना, और लोग जो है उनको भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन की बिना बहुत दुखी हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं भोजन की कोई समस्या नहीं है, केवल अपनी आंखें खोलो। आप ये समझो कि श्री कृष्ण के आप पुत्र हैं। अब एक छोटा बच्चा है, अगर अपने पिता को छोड़ करके सड़क में
जो है चला जाता है और दुखी होता है। और उस बच्चे को समझा दो कि तुमने अपने पिता से द्रोह किया, तुम अपने पिता को याद करो और वो तुम्हारे पिता हैं, तो तुम्हारी कोई समस्या नहीं, सब कुछ तुम्हारे पास है। तो इसीलिए प्रभुपाद के बारे में कहा जाता है कि प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है। और घर का मतलब क्या है कि भोजन की कोई समस्या नहीं। आपके पास जो है, आप घर में हैं तो आपको भोजन की समस्या नहीं है। जब घर से बाहर होते हैं तो भोजन की समस्या होती है। तो घर में आपको जो है पूरी सुरक्षा मिलती है और भोजन मिलता है। लेकिन एक काम घर में होता है, बैठ करके आप जिज्ञासा करो, श्री कृष्ण के संबंध में जिज्ञासा करो, भगवान के बारे में जिज्ञासा करो। तो ये जो है आपका असली कार्य है, भोजन की समस्या का कोई कार्य नहीं है ना। लेकिन जब विवेकानंद से पूछा गया कि आपके पास क्या उपाय है, लोग इतना जो है भोजन के जो है अभाव में हैं, आपके पास क्या उपाय है? तो विवेकानंद ने कहा कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन वे बहुत जो है दुखी थे कि लोगों को भोजन नहीं मिल रहा। तो उनकी करुणा की वर्षा थी, करुणा की उन्होंने वर्षा की और बहुत बड़ी महानता उनकी थी कि उनको जो है बड़ी करुणा आती थी। और वो कहते थे कि मैं मुक्ति नहीं पाना चाहता जब तक मैं देखता हूँ कि यहाँ के लोग जो है इतने दुखी हैं और भोजन के अभाव से ग्रस्त हैं। तो इनकी महानता मानी गई। लेकिन प्रभुपाद की महानता बहुत ज़्यादा है, प्रभुपाद की बहुत महानता है। प्रभुपाद कहते हैं भोजन की कोई समस्या ही नहीं है, केवल ये समझ लो कि श्री कृष्ण आपके पिता हैं और श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करो, है ना। तो प्रभुपाद ने जो घर बनाया, ये ऐसा घर है, प्रभुपाद कहते हैं सबको मैं बुलाता हूँ और भोजन सबको दूंगा। प्रभुपाद कहते हैं मैं सबको जो है इस घर में बुलाता हूँ और सबको मैं भोजन दूंगा। केवल करना क्या है, हरे कृष्ण का कीर्तन करना है और प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद और भोजन खाली रोटी का भोजन नहीं है, 4 प्रकार का चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद हो, कई प्रकार के व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन सब जो है मिलेगा। तो ये अंतर है। विवेकानंद महान है, लेकिन प्रभुपाद बहुत महान है, बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनके अंदर करुणा है, बहुत करुणा है, जीवों के प्रति बहुत करुणा है। लेकिन प्रभुपाद के पास जो है जितनी शक्ति है कि वे जो है सबको भोजन खिलाएंगे। प्रभुपाद ने कहा मैं सबको भोजन खिलाऊंगा, आओ हमारे पास, कीर्तन करो, नृत्य करो और प्रसाद खाओ, भोजन की कोई कमी नहीं, है ना। तो जो प्रभुपाद ने बताया, प्रभुपाद के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी कि ये जो है एक ऐसा घर बनाएंगे जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है। अब ना रहना चाहे अलग बात है, लोग ना रहना चाहें तो अलग बात है। तो प्रभुपाद इसलिए निंदा करते हैं कि वे नहीं आते हमारे पास, हमारे घर में नहीं रहना चाहते हैं, और फिर जो है भोजन की समस्या बताते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, गधे की तरह काम करते हैं, है ना। तो घर का मतलब क्या है, आप घर में हैं तो आप जो है कठिन परिश्रम नहीं करते, आप बैठ करके क्या करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, श्री कृष्ण के विषय में आप जिज्ञासा करते हैं, आप पढ़ते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं। तो बैठ करके ये घर में कार्य हो सकता है कि बैठ करके आप जो है बड़े जो है सुरक्षित रूप से आप जो है सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, है ना। और जब घर नहीं होता है तो आपको जो है रोटी के लिए आपको जो है परिश्रम करना पड़ता है। सूखी रोटी, ब्रेड प्रॉब्लम, रोटी कैसे मिलेगी, रोटी कैसे मिलेगी, रोटी तो कुछ भी नहीं है, कई प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद हो। तो घर, जब आप घर में आते हैं तो आप भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, है ना, और जो है सीखते हैं और सिखाते हैं। ये हमारा जो असली कार्य है।
ये मनुष्य का जीवन है, मनुष्य लोगों का यही जीवन है। और जो है आजकल के जो मनुष्य हैं वो पशु का जीवन जी रहे हैं कि बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, ईश्वर को नहीं मानते तो उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर आपके पिता हैं, तो भोजन के लिए आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, भोजन अपने आप आता है और आप जो है केवल उनका नाम लेते हैं और उनका गुणगान करते हैं। तो कितना सरल प्रभुपाद ने जो है उपाय बताया। तो ये अंतर है कि प्रभुपाद के समान कोई महान नहीं हुआ। जो दूसरे महान लोग होते हैं तो वो दुखी होते हैं, पर दुखी दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, लेकिन प्रभुपाद एक इतने महान व्यक्ति हैं जो कि किसी के दुख को दूर करते हैं तो सबका दुख ही दूर करते हैं। तो ना प्रभुपाद दुखी होते हैं और ना कोई दुखी रहेगा अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे। तो ये बहुत बड़ा अंतर है प्रभुपाद ने जो दिया। तो इसमें जो श्लोक है इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा। तो कृष्ण तो बहुत से हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णाय पहले कहा कुंती देवी ने, कृष्णाय तो कृष्ण तो बहुत से हैं। कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे प्रथासुतम। 4 कृष्ण हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, एक तो नारायण हैं जो जल में शयन करते हैं, वो भी कृष्ण हैं। कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, और ब्रज के जो प्रिय हैं वो तो कृष्ण ही हैं। कृष्णम द्वैपायनम वंदे, वेद व्यास को भी कृष्ण कहते हैं। और कृष्णम वंदे प्रथासुतम, और प्रथा के जो पुत्र हैं अर्जुन वो भी कृष्ण हैं। तो कृष्ण तो बहुत से हैं। तो उनमें से कौन से कृष्ण के लिए कुंती देवी कह रही हैं? तो कहती हैं वासुदेवाय, जो वसुदेव जी के पुत्र हैं वो कृष्ण हैं। और वसुदेव जी के पुत्र हैं तो वसुदेव जी के पुत्र तो और भी बहुत से हैं, लेकिन विशेष रूप से कौन है? देवकी नंदनाय चा, देवकी को आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण हैं, वो विशेष हैं। फिर इससे भी ज़्यादा विशेषता क्या है? नंद गोप कुमाराय, देवकी को आनंद प्रदान करने वाले हैं लेकिन नंद गोप के द्वारा पाले गए हैं। तो ये और विशेषता है। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और वो जो है गोविंद जो है, जो हमारी इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, गोविंदाय नमो नमः। तो गोविंद की व्याख्या करके प्रभुपाद बताते हैं कि उनकी हम अगर संगत में आते हैं तो हमें सचमुच वास्तव में इंद्रियों का आनंद प्राप्त होता है। अभी जो हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं अशुद्ध हैं, इनके द्वारा हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? दुख और कष्ट मिलता है। लेकिन जब हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, तो उनके द्वारा जो आनंद होता है, आनंद प्राप्त होता है, वो कैसा आनंद है? वो असीमित आनंद है। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ कुंती महारानी जो है उन कृष्ण की वंदना करती हैं जिसमें अंत में क्या नाम आता है? गोविंद, जो कि इंद्रियों को वास्तविक आनंद प्रदान करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।